Hello everyone, welcome to the channel Adarsh. Today we will be discussing 10 research topics on silkworms, diseases and pests affecting silkworm. तो हमारे viewers ने किसी ने like ये comment किया था कि उन्हें जानना था कि अभी recent research topics कौन सी हैं silkworm के ऊपर जो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो today we'll have a short discussion on the common research topics that you can choose on silkworms. Okay, a very, very warm good evening from Guneet Kaur, educator, Adarsh. Okay, chalo. So the first topic that we can discuss or we can research on if we want to work on silkworms is molecular characterization of silkworm pathogens. So the pathogens that affect जो like ऐसे disease causing organisms है जो silkworm को affect करते हैं उसके molecular characterization को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? और उस पे sorry. Okay, so the molecular characterization, I will just use some annotations. Okay, so the molecular characterization you can do on silkworm pathogens. Okay, this is a very good topic. And how do you have to work on it? Investigate the genetic makeup and virulence factors. Virulence factors means how do they cause, what is their like effect of those pathogens. Okay, so virulence factors of various pathogens like bacteria, viruses and fungi that cause diseases in silkworm. This research can provide insights into potential strategies for disease control and resistance breeding. Okay, so see why have I put this like elaboration on the topic is because like whenever we choose topic for research, it has to be like beneficial to the environment. How is it affecting the environment? That is one of the main things, right? So when we talk about molecular characterization of silkworm pathogens, so this will provide an insight into potential strategies, like how like different strategies are incorporated for disease control and resistance breeding. Resistance breeding means controlled breeding. Okay, so if there is like if these silkworms are continuously like they are bred and they are like if they are led to complete their life cycle, तो उसको भी control करना है क्योंकि if the pathogen starts infecting it, then there will be no use. They will not be able to complete their life cycle. Okay, so this is one of a very good topic, that is molecular characterization of silkworm pathogens. Okay, next, impact of environmental factors on silkworm disease susceptibility. What is susceptibility? How clearly, like how the disease can affect, okay, the silkworm. Okay, that is in disease susceptibility. So how should we elaborate on this? Study how environmental factors such as temperature, humidity and habitat affect the susceptibility of silkworms to diseases. Okay, so how these factors, they increase or decrease the probability of the diseases that can infect silkworms. So this is a very, very hot topic and good topic. Understanding these relationships can help in implementing effective disease management practices. So if I say, if you are working on this research topic, so how will it be beneficial to you? How are you helping the environment or helping the people, the community? So it can help in implementing, we can use effective disease management practices of how, like which just a trial and error, which disease management practices is better for their control, for like proper breeding of the silkworm. Okay, so this is a very good topic. So topic 2 is impact of environmental factors on silkworm disease susceptibility. Okay. Next is topic 3, identification and management of viral diseases in silkworm. Okay, just caused by viruses. So how do you focus on this? Focus on the identification, characterization and management of viral diseases that pose significant threats to sericulture. Means they, any viruses that affect in any part of the life cycle of the silkworm, that we can study, we can use its identification, characterization and management, how they can be employed and how like the viral diseases can be curbed as in
like they can be stopped. Okay, so that is also one of the very trending topics. Develop diagnostics and explore antiviral strategies to combat these diseases. So once you know the common virus, see हम जब रिसर्च करते हैं तो हम उसमें solution, when you make a project or make any case study or make any research topic, you have to also pose as in आपको like उसकी solutions भी, जो estimated solution which you can decipher, जो आप सोच सकते हो, वो भी that will be a complete research when you put that in a conclusion. Okay, ताकि आप रिसर्च, आपने रिसर्च तो कर दिया, पर आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या उसके उसको करेक्ट करने के स्ट्रैटेजीज आप सजेस्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो द conclusion of the result, right? So in this, if you choose this topic as identification and management of viral diseases in silkworm, then there can be, once you know the viruses that affect them, we can also you can at the end conclude which are the antiviral strategies that we can combat, we can fight against these diseases that affect the silkworms. Okay, so what is the third topic? That is the identification and management of viral diseases in silkworms. Identify and then manage. How can you implore, you can give up the strategies, antiviral strategies to combat these diseases. Okay, so this is topic number 3. Coming to topic number 4, that is antibiotic resistance in silkworm pathogens. So when I say antibiotic, means they fight antibiotics means what? It fights against the bacteria. Resistance, it just stops those pathogens to affect it anymore. Okay, so how do I elaborate this research topic? Investigate the prevalence. Prevalence means what all are present. ओके, प्रेवलेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैथोजेंस. पहले तो हमें सर्च करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैथोजेंस है जो अफेक्ट कर रहे हैं सिल्कवर्म को. मतलब कोई भी एंटीबायोटिक्स आप डाल रहे हो लेकिन वो रेजिस्ट कर जा रहे पैथोजेन, उसके भी अब हम कॉकरोच स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी कॉकरोचेस आ रहे हैं, तो मीन्स दैट कॉकरोच इज इम्यून टू दैट, इट इज रेजिस्टेंट टू दैट स्प्रे. ओके, तो वो एंटीबायोटिक जो रेजिस्ट करने के बाद भी वो पैथोजेंस अफेक्ट कर रहे हैं सिल्कवर्म को, उसके बारे में यू हैव टू इन्वेस्टिगेट. ओके, एंड एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव मेथड्स फॉर डिजीज कंट्रोल सच एज प्रोबायोटिक्स और फेज थेरेपी. फेज क्या है? हमारा जो वायरस का कोटिंग होता है, दैट इज फेज, एंड देन हाउ इट अफेक्ट्स, हाउ व्हाट आर द थेरेपीज थ्रू दैट, उसको ही हम we will be using that to stop the expansion of the pathogens, okay, affecting the silkworm. तो पहले तो हमें ये जाना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मतलब हम एंटीबायोटिक्स हैं जो उसको भी रेजिस्ट कर जाते हैं ये पैथोजेंस, और फिर भी अफेक्ट कर देते हैं सिल्कवर्म को. तो हमें उनके बारे में पहले जानना होगा, एंड देन वी हैव टू यूज alternative methods. See, antibiotic is already killing those bacteria, those pathogens, bacterial pathogens which are affecting the silkworm, but जो उसको भी पार कर जा रहे हैं, उससे भी वो जो affect नहीं हो रहा है, तो we will implore some control strategies other than antibiotics. So that will be probiotics of phage therapy, through which we will see how their these antibiotic resistant pathogens could be fought for. Okay, so this is our fourth topic, that is antibiotic resistance in silkworm pathogens. Okay, coming to our fifth topic, that is role of immune response in silkworm defense against pathogens. Please understand this role of immune response. Every organism in this world has developed their own immunity to fight against the diseases. So how does this immune response in the silkworm affects, you can even choose some specific pathogens, some common pathogens that affect the silkworm. So we can choose one of those pathogens, and then we can see how the whole mechanism of immune system works in the
like a silkworm's body. Okay, so this can be a very good topic for research. Okay, so how do we elaborate on this? Study the immune response of silkworms against various pathogens and evaluate how this should be. There should be proper data that you how will you judge the immune response. ऐसे तो नहीं होगा आप सिर्फ एक लाइक कुछ एनवायरनमेंट में उसको सिल्कवर्म को डाल देंगे और फिर उसने अगर वो एनवायरनमेंट को सपास कर लिया और उस पे still like they are living, so then that is not just that we have to, when we are doing research we need to have proper data of our we have to properly record our data of what we are studying on. Okay, so once you study about various pathogens that affect the silkworm, we also need to evaluate, we see how they contribute to disease resistance. Okay, so which all how does the immune system of the body they affect, it fights against the diseases. This research can aid in developing immunomodulatory approaches for disease prevention. तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आप जानोगे कि कौन से ऐसे किस तरीके से इम्यून सिस्टम हम सिल्कवर्म का फाइट कर रहा है, तो उसी तरीके से हम उसके मॉलिक्यूल जो हमारे सिल्कवर्म का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें उसके क्रोमोसोम नंबर ऑलमोस्ट सेम है, तो उसमें कैरेक्टर्स भी कुछ कुछ सेम होंगे ही। तो उसी तरीके से हम अगर जिस तरीके से सिल्कवर्म फाइट कर रहा है पर्टिकुलर डिजीजेस को, तो वी कैन एनालाइज ऑफ द सब्सिक्वेंट अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो which can fight, so that will be immunomodulatory approaches for disease prevention। जैसे हम हमारा फेवरेट बैक्टीरिया कौन सा है जब हम रिसर्च करते हैं, तो दैट इज ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। सो उसमें देयर क्रोमोसोमल structure and the number, it is quite close to humans, right? And it also, E. coli is also present in our gut. So उसको हम अगर ई कोलाई के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको कुछ तरीके से रिलेट भी करते हैं अपने बॉडी से ह्यूमन और ह्यूमंस के साथ, एंड देन इट आल्सो हेल्प्स इन दैट वे, राइट? सो वन रिसर्च कैन लीड टू अनदर एंड अ क्योर फॉर अनदर, राइट? सो उसी तरीके से if we know the how the immune system of the silkworm is acting, so we can also look for other options of the related pathogens or related any organism. Okay, so this comes our first topic, role of immune response in silkworm defense against pathogens. Okay, so we will be concluding this with the developing of immunomodulatory approaches for disease prevention. Okay, so this is our fifth topic. Next, coming to our sixth topic, that is impact of pesticides use on silkworm health and sericulture. So jaise the crops they feed on, what do the silkworm feed on? They feed on the mulberry leaves, right? So agar mulberry हम grow कर रहे हैं, पहले तो mulberry plant हम grow करेंगे और उसके बाद हम these silkworm को उसमें डालेंगे so that they develop into cocoon and then we get the silk, right? So किस तरीके से वो पेस्टिसाइड, अगर जैसे हमने बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा है ना, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, हम इवन वी व्हेन वी टेक अप सम क्रॉप्स, व्हाट हैपेंस, द केमिकल्स दैट इज देयर इन द क्रॉप्स वो हमारे बॉडी में भी चले जाता है, एंड दैट गोज इन मल्टीपल अमाउंट बायोमैग्निफिकेशन, जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म में बढ़ते जा रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, उसी तरीके से उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो it leads to, जैसे concentration बढ़ेगी तो of course it will have more impact on the organism. Okay, so impact of pesticide use on silkworm health and sericulture. Okay, तो अगर silkworm का worm के cycle का कुछ भी stage में उसमें affect होगा तो क्या होगा, हमारा पूरा प्रोसेस जो है सिल्क ऑब्टेन करने का, सेरिकल्चर का जो प्रोसेस है वो पूरा अफेक्ट हो जाएगा, राइट? तो हमें ये टॉपिक में वी कैन नो अबाउट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द सिल्क वर्म ऑन द पेस्टिसाइड यूज, कौन सा पेस्टिसाइड विल इज ओके दैट वी कैन यूज एंड विच इज नॉट गुड, एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म, दैट we can take it as the topic for research. Okay, to assess the effects of pesticide use on silkworm health, cocoon quality and silk production. So you know that all the silk that is produced is not of very good quality, so
हमारे कुकुन की क्वालिटी भी अफेक्ट करती है on the what kind of mulberry leaves they are fed on. If the leaves are not that good, so the silkworm will not feed on a good leaf. So what will happen? The cocoon quality will differ, right? So just to assess, to know the effects of pesticide, different pesticides, how are they affecting the cocoon quality? This will be a very good topic of research. And identify safer alternatives. Say, as I told you, every research, ये एक cycle है. हमारा research जब हम research करते हैं, तो again that is a cycle. If you start and use a problem which is affecting the environment, तो अगर आप एक problem choose करते हो, तो you have to at the end of the research, you also have to suggest some alternatives which you understood, which you analyzed through the data and all that study that you did in the research. Okay, so how तो मैंने जो ये extension दिया है of the topic, so first the first half just tells you that how you have to like work on what factors you can work on, and then you have to identify the safer. This is the conclusion that you have to draw in the research. Okay, so identify safer alternatives or integrated pest management strategies to minimize adverse effects. Okay, so any pesticide which is affecting the which is leading to biomagnification and which is leading to the poor quality of the cocoon, maybe, or if it is affecting the life cycle of the silkworm, then we should stop using that. So this will be a very good topic of research. Okay, so I'll just repeat the topic, that is impact of pesticide use on silkworm health and sericulture. Okay, so coming to our next topic, that is biological control of silkworm pests. Okay, biological control is very much in the news. आपको पता है कि मतलब अभी हम chemical जो pest control और crops को करने के लिए हम यूज करते हैं कि कोई भी पैथोजेंस उनको अफेक्ट ना करे, तो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर बायोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी कॉमन problem that has been researched on since a long time, that is biomagnification, कि किस तरीके से जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हमारे बॉडी में, जैसे ही वो अगर आप नॉन वेज भी खा रहे हो सपोज, तो इफ दे आर ultimately feeding on plants only, you are feeding on herbivores, let's say, if you are eating chicken maybe, so they are eating seeds of the plant only, right? So if the plant is affected, the chick will also get affected, and subsequently जब आप उसको feed करोगे, तो of course you will also get a higher magnified amount of that chemical, right? So we should look for biological control methods of silkworm pests. Okay, and how do you work on it? Investigate the potential using natural enemies. Natural enemies means what are the natural sources, जो biological, which is already there in the environment and you need not produce it in the laboratory. So such as predators, parasitoids, or entomopathogens as biological control agents against silkworm pests. Okay, so these entomopathogens are insects only which fight against the pathogens जो silkworm को affect कर रहे हैं. Let's say organism A is affecting silkworm, तो जो organism B है, that is entomopathogen, that is an insect. Okay, and they are feeding on पैथोजन ए. ओके, तो अगर वो ए को ऑलरेडी क्रॉस कर रहे हैं, मतलब उसको अगर ऑलरेडी मार दे रहे हैं, तो हमारा सिल्कवर्म तो बच जाएगा ना. ठीक है, तो दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट इन द लेबोरेटरी, सो दे आर एंटोमोपैथोजेंस. पैरासाइटॉइड्स मींस कुछ प्रेडेटर्स जो हमारे पैथोजेंस है, उसी के कोई पार्ट को हम ले लें और उसको कल्चर करके मीडियम में, उसको उस मीडियम में डाल दे कि जिससे वो नहीं बिल्डअप हो पाएगा और ग्रो नहीं हो पाएगा, वहीं पे मर जाएगा, तो देन अगेन आवर सिल्कवर्म विल बी stopped. Okay, so these are methods how we can biologically control the pests of silkworm. Okay, this research can lead to eco-friendly pest management practices. Okay, of course, if anything which is biological, which is already there in the environment and it is controlling our existing problems, then it will be a very good
research topic, right? So this will be the conclusion and you can work on it and elaborate on the topic. Okay. So I am just repeating the seventh topic, that is biological control of silkworm pests. Okay. Chalo. So next we come to the topic 8, that is analysis of molecular mechanisms of silkworm pest interactions. So there may be like organism A which is affecting the silkworm and organism C which is affecting the silkworm. तो दोनों जो pest है उनकी भी बीच में कोई भाईचारा है कि नहीं, like they are also, there is some interaction between them or not. If there is a common source, then we can just hit the common source and both of will be getting diffused. Okay, तो हमारा silkworm को हमारा हमें बचाने का, like that is our goal, right? So anything which is affecting that we can like just curb it down. So this is the topic, analysis of molecular mechanisms. We have to know the molecular mechanisms of these pest interactions that are affecting the silkworm. Okay. So how do you do that? Study the molecular interactions between silkworm and common pests like the silkworm mulberry pyralid. This is the common of the common pest which affects the silkworm. Glyphodis phylloilis is the scientific name. Okay, so you can study on the different molecular interactions that occur in them. Okay, certain protein interactions or maybe certain environment in which like they get diffused or they die or maybe something like that. So if once you know the molecular mechanism, the whole molecular structure of it, you can analyze all that. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया रिसर्च में हम पहले तो प्रॉब्लम जानते हैं, उसके बाद हमारे वी हैव टू कंक्लूड इट विद अ सॉल्यूशन, राइट? सो दिस इज हाउ रिसर्च गोज अप. सो यू कैन टेक अप दिस टॉपिक एंड देन यू कैन elaborate on it further, right? Understanding these interactions can inform pest control strategies. So हर एक टॉपिक अगर आप देखोगे तो you are given a common like what will be the outcome of it, what will be the, because जब हम like अपना research proposal भी जब देते हैं तो we have to convince our like professor who is guiding us that whatever we are choosing, whichever topic we are choosing is helping the environment. So you have to be very fixed up on that, like you have to put in your proposal in a very good manner and to show that it will actually affect the environment and be a result full research, right? So unless you prove that, your proposal will not get accepted, right? So these are certain tips and certain like topics which I'm telling on. You can elaborate on this and study more on it once you know. क्योंकि जब हम हमें research proposal prepare करके देना होता है, so it is quite vast and it involves a lot of like research and like you should know what are going on and you have to also have a conclusion. क्योंकि हमने अभी तक रिसर्च किया नहीं है कि हमने लाइक इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, बट हमें कंक्लूजन पता होना चाहिए. ओके, दिस इज अ बिट लाइक क्या बोलूं, थोड़ा अलग है, बट देन आपको कंक्लूजन भी आपको अपने प्रपोजल में ड्रॉ करना होता है कि लाइक क्या आप इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट और व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी. बिकॉज हम रिसर्च कर रहे हैं इतना, अगर हमें स्टाइपेंड मिल रहा है या हमें एड मिल रहा है अपने like professor से भी, तो then there should be certain things which we are like aspiring to do and with this topic. So these are conclusions जो हमें भी like we should know how it will help the like research, right? So understanding these interactions can inform pest control strategies. Once you know what are the molecular interactions, you can look for certain goals, you can look for certain chemicals which are affecting it, and then you can finally give a conclusion कि सपोज अगर हम ये एनवायरनमेंट में रख रहे हैं या ये पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं या ये बायोलॉजिकल पेस्ट अगर यूज कर रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन हमें किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि पैथोजन का इफेक्ट सिल्कवॉर्म पे ना पड़े. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज आवर गोल कि सिल्कवॉर्म की लाइक उसका साइकिल, लाइफ साइकिल चलते रहे बहुत अच्छे से और हमें सिल्क पे सिल्क मिलता जाए, ठीक है. तो that is our goal. So once you take one part of it, so you can just study on it and give a conclusion and do your further research on, right? So I am repeating my 8th topic, that is analysis of molecular mechanisms of silkworm pest interactions. Okay,
Next is topic 9, that is impact of climate change on silkworm diseases and pests. अगर जैसे कि मैं इसमें स्पेसिफिकली आपको डिजीजेस एंड पेस्ट के बारे में बता रही हूँ कि किस तरीके से आप जो भी, क्योंकि सिल्कवर्म है ठीक है, उस पे भी बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ रिसर्च हो सकते हैं, बट बेस्ड ऑन आर लाइक some viewers had asked me that what are the like common topics if they want to work on silkworm, अगर उनको लाइक एंटोमोलॉजी में इंटरेस्ट है, इंसेक्ट की स्टडी में इंटरेस्ट है, और उनको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है कि क्या प्रपोजल वो दें, तो दे कैन यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस presentation and you will know that which are the common topics which is there in the news and which is there in the limelight, which you can choose and elaborate it more and to get the result, right? So सिमिलरली जैसे कोई भी डिजीज है, कोई भी पेस्ट है, पैथोजेन है जो अफेक्ट कर रहा है सिल्कवर्म को, तो उस पे भी दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिज्म, सो दे विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, राइट? तो लाइक क्योंकि हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी लाइक सिल्कवर्म को रख सकते हैं ताकि उसको पैथोजेंस या पेस्ट अफेक्ट ना करे, बट only when we know which pests are getting affected with so and so climate, then we can do this, right? So how do we work on this topic is evaluate how changing climatic conditions affect the prevalence and distribution of diseases and pests affecting silkworm. पहले तो हमें जानना like common जो disease और pest affect करते हैं silkworm को, वो हमें पहले तो चॉक आउट करना है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि उसका प्रेवलेंस कितना है, मतलब कितना कॉमन है वो पेस्ट कि जहां पे भी सिल्कवॉर्म की लाइक उसका कल्टीवेशन हो रहा है, सेरिकल्चर हो रहा है, तो उसके कितने प्रेवलेंस है। एंड थर्ड कैन बी योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस, दैट इज कितना, मतलब कौन, अगर ये डिजीज उस पेस्ट से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, देन वी कैन सी विच आर द क्लाइमेटिक चेंजेस, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन भी है। तो आप अगर ए प्लेस ए में अगर सेरिकल्चर कर रहे हो और प्लेस बी में सेरिकल्चर कर रहे हो, तो दोनों के एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग होंगे। सपोज बैंगलोर में अगर सेरिकल्चर हो रहा है तो उसके एनवायरमेंटल लाइक चेंजेस अलग है, वेस्ट बंगाल में अगर हो रहा है उसके अलग है। तो these are things like the climatic conditions also affected. तो let's say अगर ए पेस्ट है जो बैंगलोर में अफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है एनवायरमेंट, तो अगर वहां अफेक्ट नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो पेस्ट के प्रेवलेंस ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर हम लाइक सिल्कवॉर्म जब सेरिकल्चर करेंगे तो वी कैन कंट्रोल दोज लाइक मीडियम, ओके, दैट मीडियम कैन बी कंट्रोल्ड, एंड फिर हम उसकी प्रोडक्शन को सही कर सकते हैं। ओके, सो दिस रिसर्च कैन हेल्प एंटिसिपेट इज अगेन लाइक व्हेन यू आर जस्ट प्रिडिक्टिंग कि कोई भी चैलेंजेस आएंगे, फ्यूचर चैलेंजेस, लेट्स से अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत बारिशें हुई है समर्स में इन द नॉर्थ, विच इज नॉट सच अ कॉमन फिनोमिनन लाइकवाइज। तो वी कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, लेकिन हमें प्रोडक्शन तो अभी जारी जारी रखनी है अपना, हमारा एक्सपोर्ट भी होता है बहुत सारी। तो just to know and be prepared of the future, once we know there are climatic changes occurring in the silk common pests that are affecting the silkworm, so this can be like one of the topics of research, a very good topic of research for students who are interested in sericulture topics, right? Okay, so I'm just repeating the topic: impact of climatic change on silkworm diseases and pests. Okay, last but not the least is that 10th topic, that is development of sustainable disease and pest management strategies for sericulture. Sustainable मतलब कि जो environment में sustain रहे, उसका कोई उसकी shelf life, या मैं बोलूँ shelf life तो हम products की बोलते हैं, but then it is like useful and beneficial to the environment without getting, it should not be a one time use, like एक बार हमने use कर लिया तो भाई extinguish हो गया, ऐसा नहीं। सस्टेनेबल मीन्स जो रहे, सालों साल रहे, और वो हमारे लाइक वो हम हमें किस तरीके से हेल्प करेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल, यू हैव टू डेवलप सस्टेनेबल डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर सेरिकल्चर। जैसे कि मैंने बताया सेरिकल्चर में हमारा जो पूरा लाइफ साइकिल है सिल्कवॉर्म का, दैट इज वेरी क्रिटिकल, राइट? तो आपको हर एक स्टेज के लाइक जो प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब कौन से उसको पेस्ट अफेक्ट कर रहे हैं, या किस क्लाइमेटिक कंडीशन से वो इफेक्ट हो रहा है, या किस एनवायरनमेंट में उसकी लाइक
प्रेवलेंस पेस्ट की कम हो जाती है, लेकिन मलबरी लीव्स ग्रो कर सकते हैं और वर्म्स भी प्रॉपर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो अगर हमें डिमांड हमारी बहुत हाई है सिल्क वॉर्म सिल्क की, तो हम उसको वो क्लाइमेटिक पर्टिकुलर कंडीशंस में रख दें, तो तभी भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा विदाउट एनी failure, right? So once we like judge and work on this sustainable diseases and pest management strategies for sericulture, it will be a boon to the sericulturists, right? So how do we do that? Integrate the findings. Integrate means आपको assemble करनी है, जैसे मैंने बताया research, तो हमारा already कुछ डेटा ऑलरेडी होगा और उसी पे और हमें रिसर्च करके वी हैव टू इंटीग्रेट द फाइंडिंग्स फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च एरियाज। सी डेटा हम जब रिसर्च कर रहे हैं, हमारे डेटा इज लाइक वेरी क्रिटिकल एंड वेरी लाइक इट इज गॉड, नाउ डेज डेटा इज गॉड, क्योंकि उसी से हम सारा लाइक पहले का भी पता करते हैं और आगे का भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है? तो with your findings, with all which the existential findings, we can integrate these and we can develop certain comprehensive means elaborative कुछ like extensive explanation पूरा करके हम sustainable और eco friendly disease and pest management practices कुछ implore कर सकते हैं, कुछ हम suggest कर सकते हैं as a researcher. Okay, so we can do that. Okay, so this is one of the very good topics, and इस पे भी हम topic कर सकते हैं. And of course, once your research proposal gets accepted and your researcher and the panel is all convinced, you can take up these topics and elaborate on that and थोड़ा इधर उधर करके, because entirely ये topic तो of course आप नहीं ले सकते हो, but then you can just based on the place that you're living in and based on the resources that you have in your lab and your university, you can just elaborate and like develop on these topics, and you can easily prepare your topic proposal for if you have to work on sericulture. Okay, so these are the top trending topics, and if you like our content for today, do like, comment, share, and subscribe to our channel, Adarshani. Thank you, everyone. Have a very good day. Bye-bye.